So next one is the business software. Business softwares are mainly designed for growth of the business, right? So इसके लिए जो सबसे important concept होता है किसी भी business को growth करने के लिए, that is known as your MIS, that is your Management Information System, right? Basically, this Management Information System includes discrete type of systems, right? Discrete system software is used in this to evolve management information system very well. And basically, as I have already told you, that business software is used to grow, it is used to growth for a company. See, such type of softwares are being developed so that we should well analyze that how my business should grow, right? It is also very important. Third, very important thing is that कि बिजनेस सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है जिसके साथ हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन होता है. डीबी एप्लीकेशन मींस डेटाबेस एप्लीकेशन. अब इस चीज को जानना बहुत जरूरी है. आप लोगों ने शायद सैप का नाम सुना होगा, SAP. तो सैप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लोग बिजनेस में किसी भी कंपनी में जितने भी हमारे मैनेजमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इस सैप के थ्रू, इस सैप सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग सारे के सारे डिपार्टमेंट को हम लोग एक जगह इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं. एंड दैट इज द बेस्ट पॉइंट फॉर एनालिसिस द ग्रोथ एंड द बिजनेस ऑफ ए कंपनी, राइट? वन इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, इट शुड बी योर डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स बाय टेकिंग सम इनपुट्स we can well analyze that where our or where my business will grow and how it will grow. There are certain softwares are building right now, right? So that is very important to take the decision how to grow my business very well. So ultimately, in nutshell, I will conclude about business software as by anyhow how my business will grow. So the growth of the business is depending upon such type of सॉफ्टवेयर. तो कभी कभी कुछ कंपनीज किसी दूसरे आईटी कंपनी को ये बोलती भी है कि हमारे लिए इस तरीके का आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दें, राइट? नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो यूज्ड इन इंजीनियरिंग, दैट इज इन द टेक्निकल फील्ड एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर. इसके लिए हालांकि बहुत सारे साइंटिफिक सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर MATLAB. दैट इज फुल फॉर्म ऑफ MATLAB इज मैट्रिक्स लेबोरेटरी. इट इज अ वेरी technical and very powerful tools which is including almost all the engineering discipline, चाहे वो सिविल की बात हो, मैकेनिकल की बात हो, CS की बात हो, इलेक्ट्रिकल की बात हो या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो. Believe me, if you are having a basic concept of MATLAB, then you can explore your knowledge in MATLAB in all areas. Because I have used MATLAB, so MATLAB में you will get the external tutorials also, extra tutorials also. So that help of all those tutorials, you can go for scientific and engineering softwares also, right? So the first point I have included in that sense only, it includes almost all the discipline of engineering. Second one, see how the MATLAB is very important and where it is being very vital playing role. First is your astronomy to your volcanology, right? अभी तक तो हालांकि वोल्केनो के ऊपर बहुत ज्यादा शोध हो चुका है. All those things are depending upon your MATLAB only, right? Okay, next, automotive stress to space shuttle orbital dynamics, right? It is also playing a very important role in satellite communication, correct? That's why here it has been written that space shuttle orbital dynamics. Next, it is also included in various part of biology. Where it is being used, it is used in bioinformatics, right? So it is also used in molecular biology to automated manufacturing. So in nutshell, these are the very important examples of the softwares which are used in various areas in day-to-day life.